हेलो awesome people, I hope you guys doing absolutely fine and welcome back to my channel। मुझे पता है बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं, बट क्या करें, एआई ने ऑलरेडी दिमाग बहुत ज़्यादा खराब करके रखा है। इन अ गुड वे बिकॉज हर दिन कुछ नई नई चीज़ें आती रहती है, नए नए अपडेट्स आते रहते हैं। और आई एम श्योर कि लाइक देर इज ऑलवेज अ टाइम कि वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड इट डिफिकल्ट कि यार हमको नए नए मॉडल जो आ रहे हैं, लाइक एवरी कंपनी, राइट, लाइक गूगल है, फेसबुक है, राइट, चैट जीपीटी, ओपन एआई, दे ऑल आर रिलीजिंग द मॉडल्स, राइट। और ऊपर से डीपसीक भी आ गया था बीच में। सो एवरीवन रिलीजिंग द मॉडल एंड व्हेन वी सी द मॉडल, व्हेन यू वांट टू रन दैट मॉडल, फर्स्ट थिंग विच ऑलवेज सीज कि यार हमको ये मॉडल अपने, क्योंकि सिस्टम में कंपेटेबल नहीं होती, बिकॉज दैट रिक्वायर्ड दैट मच कॉम्पेटिबिलिटी जो मोस्टली नहीं होती है। आई रिमेंबर द सिनेरियो कि जब हम लोग वर्चुअल मशीन और मतलब वर्चुअल मशीन यूज करते थे सो दैट वी कैन यूज मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इन अ सिंगल सिस्टम, राइट। बट वो भी उस टाइम पे वी आर फेसिंग सम रिसोर्स इशू, राइट, कि दैट वी आर नॉट एबल टू डिस्ट्रीब्यूट आवर रिसोर्सेज करेक्टली सो दैट वी कैन यूज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द हार्डवेयर रिसोर्स दैट वी हैव। सो उस टाइम पे हमारी सबकी जान बचा ली थी कंटेनर्स ने, राइट। द कंटेनर जब आया एंड स्पेसिफिकली डॉकर। सो आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द डॉकर लेटेस्ट अपडेट्स विच दे रिलीज्ड टू सेव आवर लाइफ, राइट। सो आई एम टॉकिंग अबाउट डॉकर मॉडल रनर। This is the best thing is that you can build and run Gen AI models locally on your system. But for that you need a Docker desktop, right? So हम लोग जानेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल में, right? अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दिस, राइट। और बाकी तो ऐसे कंटेंट आते रहेंगे, नो वरी अबाउट दैट। सो ये है डॉकर। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आपने डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल नहीं किया है तो प्लीज कर लो। यू कैन इंस्टॉल जस्ट गो docker.com और क्लिक ऑन द डाउनलोड and that's it. I already have a Docker desktop installed, so I'm not going to do that again. So let me just bring it up over here. पर मेक श्योर कि आपका वर्जन लेटेस्ट अपडेटेड हो। सो इट्स रिक्वायर्ड कि वो 4.40 होना चाहिए, क्योंकि उसी में यू कैन इनेबल दिस फीचर, राइट। और वो फीचर इनेबल करने के लिए यू हैव टू गो टू सेटिंग, फीचर डेवलपमेंट, वेयर यू कैन जस्ट सिंपली क्लिक इनेबल डॉकर मॉडल रनर। ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर देना है एंड अप्लाई द रिस्टार्ट। आई सिंस आई ऑलरेडी डन दैट, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट अगेन, राइट। तो फर्स्ट थिंग कि इसका फायदा ये है कि आप जेन एआई के जितने भी मॉडल्स है वो डायरेक्टली अपने लोकल सिस्टम में रन कर सकते हो। बट आप बोलोगे यार हम तो पहले भी कर सकते थे, बट एट दैट टाइम यू आर यूजिंग ओलामा, राइट, ओलामा कैपेबिलिटीज टू रन दैट। बट दिस ऑल द मॉडल्स यू कैन डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हो डॉकर हब से, राइट। इफ आई कैन पुल इट ओवर हियर, सो अभी के सारे जो अपडेट जो मॉडल्स है वो आपको डायरेक्टली डॉकर हब से आप पुल कर सकते हो। सो आपको दूसरी, सो अल्टीमेटली वी आर यूजिंग डॉकर, देन वी आर यूजिंग ओलामा एंड अंडरनीथ ओलामा वी आर यूजिंग द मॉडल्स। सो अभी वो सब चला गया है, वी आर डायरेक्टली यूजिंग जेन एआई मॉडल्स थ्रू द डॉकर। सो ये इसका बेस्ट फायदा है, राइट। वैसे मैंने डीपसीक पे भी एक छोटा सा डेमो बनाया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उसका वीडियो नहीं बना पाया। पर मैंने उसको गिटहब पे उसका पूरा कोड डाला था, राइट। हाउ कैन यू रन डीपसीक on your by using Docker desktop, but for that you need to just you don't just need Docker desktop, you also need Olama as well. So Docker desktop के अंदर Olama and Olama के अंदर आप मॉडल रन कर सकते हो, राइट। बट अगेन उसका साइज बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है। दिस इज वेयर डॉकर सेव योर लाइफ। और हम लोग पहले भी जब डॉकर यूज करते तो आई थिंक हम लोग इसी चीज के लिए यूज करते थे उसको, राइट। सो आप देख रहे हो यहाँ पे सारे के सारे मॉडल्स वगैरह है, डीपसीक की मॉडल्स है, राइट, ये देखो। और डायरेक्टली आप इसको यहाँ से पुल कर सकते हो, राइट। और कमांड सारे वही है, सिर्फ उसमें आगे उन लोगों ने मॉडल लगा दिया है। सो सिंस मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट अगेन। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो अगर आपको देखना है कि आपके सिस्टम में डॉकर मॉडल इंस्टॉल्ड है तो जस्ट वंस आपने रिस्टार्ट कर दिया, का डॉकर एक्स्ट्रा फीचर इनेबल कर दिया है, यू कैन चेक दिस, राइट। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका डॉकर मॉडल रनिंग है। अगर आपको
देखने कौन कौन से कमांड है, तो आप डॉकर मॉडल डाल दो, आपको सारे कमांड मिले। सो दीज आर द कमांड दैट विच कैन यूज, राइट। पुल है, मतलब पुल टू डाउनलोड द इमेज, यू कैन लिस्ट। सो अभी फॉर एग्जांपल अगर आपको देखना है कि अभी व्हाट आर द मॉडल, मैंने ऑलरेडी हिंदी मॉडल इंस्टॉल तो किए थे। ओके, सो मैंने ये वाला लामा मॉडल ऑलरेडी यूज किया है, और ट्रस्ट में मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। आई वॉज बिल्डिंग सम डेमो, और मैं आपको बताऊंगा वो डेमोस के बारे में भी, और ऑल्सो आई हैव अपडेटेड दोस डेमो एज वेल, राइट। सो या एक काम करते हैं, डॉक्टर एक आधा मॉडल पुल करके देखते हैं, यही वाला करेगा, कौन सा करना है, लाइव भी नहीं रहा वो पूछ सकूं मैं आपको, चलो यही वाला करते हैं, है ना। वैसे बहुत सारे मॉडल्स है, यू कैन सर्च, राइट। अब तो अभी के लिए फिलहाल लेट्स कॉपी दिस वन और लेट्स पुल इट हियर। ओके, कितनी साइज है इसकी देखते हैं, टाइम लगेगा थोड़ा फॉर श्योर, राइट। बट मेक श्योर कि, और हाँ, और एक चीज इंपॉर्टेंट आपको बतानी है कि ये कैपेबिलिटीज अभी के लिए फिलहाल ओनली एंड ओनली एआई, सॉरी, एप्पल सिलिकॉन जो फर्मवेयर है उसके लिए ही है। सो अभी ये विंडोज और लिनक्स के लिए अवेलेबल नहीं है। सो इवन इफ यू हैव अ डॉकर डेस्कटॉप, मेक श्योर कि आपके पास एप्पल फर्मवेयर हो, नहीं हो तो दैट्स ओके, यू कैन स्टिल रन दैट, but you need to use Olama for that. But with directly Docker desktop, if you want to use this capability, so अभी currently इसी में है सपोर्ट। बाकी सपोर्ट्स मतलब बाकी प्लेटफॉर्म के लिए जैसे कि विंडोज है, देन लिनक्स है, 100% आने वाला। आई थिंक विंडोज के लिए बहुत ही जल्दी रिलीज होगा, एंड वंस दैट डन आई कैन डेफिनेटली शेयर दैट अपडेट्स विथ यू। एंड ये खासियत है, लाइक यू नो, दिस इज द पर्क्स ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ अ डॉकर कैप्टन प्रोग्राम, सो दैट we could able to see and also explore this feature early when it actually release, right। तो हमको थोड़ा बेनिफिट मिलता है, so that also we can create some knowledge base and we can share the knowledge with you guys। so it's all about sharing the knowledge, that's it। okay, अभी भी हो रहा है, पर एक एक बार हो गया, राइट। द वे कि जब हम लोग डॉकर इमेज जब डाउनलोड करते हैं फर्स्ट टाइम तो टाइम लेता है, उसके बाद डजंट टेक टाइम, यू कैन डायरेक्टली रन दैट वेरी स्मूथली। तो अब आप देख रहे हो हमारा जो डॉकर मॉडल है, मतलब हमने कौन सा लिया, डिपसिक R1 डिस्टिल लामा, ये वाला मॉडल हमने डाउनलोड किया है। और मेरा एप्पल M3 है, सो आई थिंक ये उसको सपोर्ट करेगा, सपोर्ट कर रहा है तभी डाउनलोड हुआ, अदरवाइज होता ही नहीं, राइट। सो मैंने पुल कर लिया अभी। नाउ व्हाट आई डू, एक बार उसको देख लेते हैं कि लिस्ट करके डॉकर मॉडल लिस्ट, यहाँ पे देखो ये हमारा जो मॉडल है यहाँ पे डाउनलोड, सॉरी यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है ये वाला। ओके, so now we need to run this model। so to run that model you can use docker model run, then run, sorry, okay, just copy this name of the model, put it here and pass the, for example, what is, क्या करें, कुछ सर्च क्या करें, यही कर लेते हैं, व्हाट इज डॉकर मॉडल रनर, है ना। लेट्स सी क्या दिखता है। पर आपको पता चला अभी कि अभी हमको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, उसने तुरंत ही सर्च करके बता दिया है। सो अभी उसने बताया, सो आई टू अंडरस्टैंड डॉकर मॉडल रनर इज, आई हर्ड अबाउट डॉकर बिफोर, is that thing the it's thing for containerized applications, right, but this is model part, it's new to me, let me think about it। क्योंकि डॉकर मॉडल रनर अभी रिसेंटली, मतलब वेरी रिसेंटली अभी रिलीज हुआ है, मतलब आप हार्डली समझ सकते हो 1 या 2 वीक हो गए होंगे इसको, राइट। तो मतलब वैसे तो टेस्टिंग फेज में तो बहुत टाइम से था, बट रिलीज टू पब्लिक इट्स, एंड बाय द वे स्टिल इन द बेटा, इट्स नॉट लाइक यू नो in the like tested version, but it's still in the beta, so that
people can use it and give the feedback. So अभी क्या है उसमें क्या दिया यहाँ पे, then start thinking Docker use container to package the software. Okay, but what about Docker model specifically? Maybe it's related to running machine learning models. See, तो मॉडल खुद सोच रहे, आई मीन मॉडल कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड यूजिंग डॉकर कुड हेल्प टू मैनेज देम, especially if you're deploying them in an environment that is not ideal for the model. So this is the reason we are using Docker Desktop, right? And we are not using any other layer. हम directly model, we are directly pulling them from Docker Hub and we are just directly using it so that वो ऐसे environment में हम लोग उसको run कर सके जिस environment में difficult हो थोड़ा run करना, right? Perhaps model run is a tool that helps to machine learning model package Docker container and then run it. I should check if there is a tool for framework for this. I know TensorFlow. Okay. तो उसने अच्छा खासा डिटेल में सर्च करके बताया है. Right. I also consider a use case where would someone use Docker model runner, probably in a production environment where they need to run models efficiently. That's what we are doing it, right? We are running this model and look at this efficiently. तो कितना इजी हो गया देखा है ना. सो कुछ और स्ट्रिंग भी पास करते. व्हाट इज, चलो ये थोड़ा डिफिकल्ट है. व्हाट इज व्हाट इज लेटेस्ट न्यूज इन, ओके, व्हाट इज ब्लॉकचेन, ये डालते क्या बोलते दिखते. ओके, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द ब्लॉकचेन इज, आई हर्ड द टर्म बिफोर. मतलब अभी जो डीपसीक का जो लामा मॉडल है, तो अभी जस्ट कीप इन माइंड दैट अभी ये मॉडल हम लोग लोकल सिस्टम पे रन कर रहे हैं. हमने मॉडल डाउनलोड किया है, सो हम ये जो भी सर्च कर रहे हो लोकली कर रहे हैं. सो पॉसिबल ऐसा है कि इसके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ना हो. इसके लिए अगर आप डायरेक्ट डीपसीक पे जाके अगर सर्च करो तो शायद आपको एकदम एक्यूरेट और लेटेस्ट अपडेट मिलेगी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन. यहाँ पे इस मॉडल में जितनी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि ये मॉडल कुछ 4.5 4 सम जीबी का है, तो उसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन हमको भी दे रहा है ना. तो अगर देखे, okay, first the name blockchain suggests the chain of blocks. I think each blockchain record transactions, but how does the chain work? So see, the model trying to think and उसके हिसाब से giving you the answer. So यहाँ पे पूरा उसने अच्छे से आंसर दिया. In summary, blockchain is a versatile, secure and transparent technology that leverage decentralized ledgers and cryptographic method to record transaction with application spanning multiple industries. Absolutely. Isn't this amazing, right? I think Docker, no way, they always amaze and they're always trying to come up with the solution which makes the people like us, right? The people who, you know, स्पेशल हमारे क्लाउड में जो काम करते हैं, डेवऑप्स में जो काम करते हैं, प्लस डेवलपर्स, उनकी लाइफ इजी तो लगे यूज दिस मॉडल वेरी इजीली, राइट? तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली ट्राई. और अगर कुछ हेल्प चाहिए तो यू कैन जस्ट यूज डॉकर मॉडल हेल्प. तो आपको सारी यू कैन यूज ऑल दिस कमांड, राइट? अभी जैसे कि डॉकर, if you want to remove this model, if let's say if you are not using it that much, you can just use docker model rm and just remove this. Okay, you can either copy this or you can just use this model id as well. Both works. And fail to remove because okay, model not found. How come? rm okay, maybe एक bug हो सकता है. Okay, so now this is a bug, I would say that कि अगर मैं मॉडल का नाम डाल रहा हूँ तो वो रिमूव हो रहा है, बट मॉडल आईडी डाल रहा हूँ तो रिमूव नहीं हो रहा है. बट दिस इज अ प्रोबेबल बग which I'll definitely report to the Docker team because that's the reason they want us to test and report the bug, report the feature which should work. मतलब टेक्निकली वैसे वर्क होना चाहिए बट वो नहीं हो रहा है. सो वेयर वी कैन रिपोर्ट सो दैट दे कैन इम्प्रूव एंड देन फिक्स द बग, राइट? सो दैट हम लोग बाद में जब वंस इट्स क्रॉस द बेटा पार्ट, सो हम लोग उसको अच्छे से यूज कर सके. सो आई एम डेफिनेटली गोना रिपोर्ट दिस वन. ओके,
and few information updates. For example, let me pull it over here. So okay, let me pull this over here. So I'm going to share all these links in my in the description, so you can just check that out. So this is the official documentation. You can definitely use it. So as I said, its availability, it's in the beta, as I told you. So it's not production ready, but you can definitely try the best capabilities that it could. Require Docker Desktop 4.40 version, as I said, and later और लेटेस्ट अपडेट अभी रिसेंटली तो 440 चल रहा है. Docker Desktop currently is only available for Docker Desktop for Mac with Apple Silicon firmware. Okay, so अगर Windows या Linux यूज कर रहे हो, इवन एप्पल में आप इफ यू हैव इंटेल फर्मवेयर, सो आई थिंक वो वहां पे नहीं चलेगा. सो बेटर है आप लोग ये ध्यान रखना, ठीक है. जब उसका भी आएगा आई डेफिनेटली अपडेट यू ऑन दैट पार्ट. और ये सारे मॉडल्स यहाँ पे अवेलेबल है, राइट. सो ये डॉकर हब, सो इट्स इन द और ये मतलब इसको हम लोग नेम स्पेस बोलते हैं. मतलब एक ही मतलब एआई नेम स्पेस में सारे के सारे ये है. तो उन्होंने अलग से एक नेम स्पेस बनाया सो दैट दे कैन डिफरेंशिएट फ्रॉम द डॉकर इमेजेस, राइट. सो बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगी. कैसे उसको इनेबल करना है मैंने आपको ऑलरेडी बताया कैसे इनेबल करना है, राइट. पर फिर भी यहाँ पे सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, प्लस यहाँ पे ऑल द बेसिक्स कमांड ऑलरेडी देयर. डोंट फॉरगेट टू ट्राई दैट आउट, राइट. एंड डोंट वरी, इट्स इन अ टेस्ट. ऑल्सो दिस डेमो एप्लीकेशन इज हियर, यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट आउट. इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा कि दैट हाउ कैन यू रन. देयर इज अ डेमो एप्लीकेशन दैट यू कैन डेफिनेटली यूज इट. तो आप ये चेक कर सकते हो. पर मैंने इस एप्लीकेशन को थोड़ा अपग्रेड किया है बाय यूजिंग अदर एआई टूल्स. So I'm going to create a separate video for that. So stay tuned. I'm going to share that one. So I just upgraded the application that they have. So I'm sure it's going to help. I just try to create a better UI and create some APIs so that we can check the health status and और भी बहुत चीज़ जो उस टाइम पे जो भी दिमाग में है वो सब चीज़ें की है और स्टिल इन द वर्किंग. सो दैट्स द रीज़न. इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा क्योंकि कुछ अपडेट्स बाकी है, थोड़े माइनर बग्स है. सो आई एम गोइंग टू या okay, and okay, I think yeah, this is one. ये भी लिंक मैं डाल दूंगा where you can check that out. Ultimately in this link everything is here, so I am not going to put this link, right. And this is a good blog which you can definitely read that why like Docker model runner क्या है उसकी पूरी information, right. So I would recommend you to just check this out as well, right. इसको पढ़ लेना, very short simple, right. इसमें भी सब डिटेल्स लिखी हुई है. These are more of technical details, right, where you can try and use it. That will help you. This is more of a understanding like what is Docker model runner and how it can make your life easy, right. Short video भी उसका आप देख सकते हो. और yeah, this is Docker hub. And I'm also going to put this link as well, like how can you run this LLM models which I just showed you, right. और आप ये भी कुछ चीजें आप यूज कर सकते हो. जनरली आप you don't need to enable this from your command line if you're using Docker Desktop. So I think that works for you. Just need to apply the changes and restart your Docker Desktop and then it works for you. Okay, so yeah, I think that's it. Make sure कि Docker Desktop इंस्टॉल करो आप docker.com पे जाके. अगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है सो मेक श्योर यू अपडेट, राइट. बिकॉज अपडेट करोगे तभी आपको वो फीचर वहां पे दिखेगा, अदरवाइज फीचर दिखेगा नहीं, राइट. आपको कहाँ जाना है, सेटिंग्स पे जाना है, फीचर इन डेवलपमेंट, राइट. एंड देयर आर अदर फीचर्स एज वेल, यू कैन जस्ट सिंपली गो एंड टेस्ट इट आउट, राइट. एंड आई प्रॉमिस दैट आई एम गोइंग टू मेक मोर सच वीडियोस जो कि हेल्प करे. और एआई लाइफ डिफिकल्ट तो बना रहा है, बट द टूल्स लाइक दिस which makes our life very easy. But the only thing that we need to keep in mind is we have to keep learning, and to learn that make sure you use that, right. So इसीलिए मैं सोचा rather than writing an article मैं ये बनाऊँ तो मैं क्या what I feel I can directly share with you and it makes sense, right. It should make sense for me. एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप अच्छा लगा होगा. और भी अगर आपके दिमाग में ऐसे कुछ है कि
कुछ ऐसे कंटेंट है which I can bring it for you. So please put in the comment and definitely do that because I decided to do that. So thank you so much for watching. Please keep learning, keep doing good work, and yeah, I'll see you in the next video. Bye bye.